Okay. Okay, so we have loaded our data in Power BI. We are taking this one sheet, Excel sheet. Okay, here you can see numbers. हम इसको लोड करते हैं. It's loading. Just give me a 1 minute. एक और बार देख लेते हैं. ओके, मैं एक और बार लोड करके देखती हूँ. डेटा थोड़ा सा स्लो चल रहा है. पावर BI, I don't know, maybe just because of system. ओके, सो ऐसा करते हैं. अभी तो शायद थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, तो उसको अभी रहने देते हैं. बाकी मैंने आपको जो डैशबोर्ड शो किया है यहाँ पे, जस्ट दिस काइंड ऑफ टाइप ग्राफ्स हम बाय द हेल्प ऑफ पावर BI इन इवन टैब्ल्यू बना सकते हैं. ठीक है, आई एम सॉरी, वो थोड़ा सा लोड होने में दिक्कत हो रहा था. तो ठीक है, सो अदर प्रोग्राम लिस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया. ठीक है, ओके. सो नाउ अरुणिमा, ऑल ओवर टू यू, प्लीज. Hello. Yeah, please, let me know if there are any questions or anything. Yeah, hi people. If you have any doubts or you want to ask any questions, you can actually raise your hand. I'll just quickly unmute you, and then you can actually shoot the questions regarding course or regarding whatever she has actually told about the data science thing. Anyone? You can raise your hand. आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. आपको रिगार्डिंग दिस जो भी आपका क्वेश्चन हो सब्जेक्ट का या फिर कोर्स का, तो प्लीज. Shabir Ahmed, I'll unmute you. You can ask your question. Shabir, you can unmute yourself and ask the question if you want to. No question? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Hello. Hello. Yes, you can. Yeah, Go Shabir. ahead. Can you hear me? Yeah, please ask. Actually, I want to go for MSc data science. Okay. Right. So you want to know about the MSc data science, no, right? Right. Okay. Sure. These basic things I know. This Python, Tableau, Power BI, NumPy, all that. Yeah. And I'm a champ in statistics. Okay. But the thing is that I am a non-tech background guy, and I'm working from last
11 years in government sector, in government of Jammu and Kashmir. I have done masters as well. Okay. So here शाबी like मैंने अपना जो ब्राउचर है वो शो किया हुआ है स्क्रीन पे, आप देख सकते हो. It's an MSc in data science basically which is related to cloud and cyber security. ठीक है, ये आपका 2 years कोर्स है with decade old syllabus. यहाँ पर आपको 12 सॉफ्टवेयर्स बताए जाएंगे in 3 years. ठीक है, जो भी हमारे पास अवेलेबल थिंग्स हैं लाइक द प्रोबेबिलिटी, वेब एप्लीकेशन, क्रिप्टोग्राफी, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू और द क्लाउड एंड साइबर सिक्योरिटी हम बोल सकते हैं. ठीक है, डेटा साइंस में ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी. ठीक है, हेलो. Is it a 3-year or 2-year program? It's a 2-year course. But you are saying in 3 years. I'm talking about the BCA beta before. Yeah. Is this online program? Sorry. Is this online degree program or we have to go for campus? Like it's basically online and a combination of offline, you can say. Like for campus you have to visit there and like just give me 1 second, I'm getting call. हाँ, okay. So basically अगर आपको कैंपस में आकर कुछ चीज़ें जो बताई जाएंगी, आपको वो क्लासेस लेनी है, वर्चुअली भी आपको बताया जा सकती है और ऑफलाइन भी आपको बताई जा सकती है. ठीक है, बाकी और इसके बारे में मैं आपका ईमेल एड्रेस जो है नोट डाउन कर रही हूँ. काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपको बताना है, तो थोड़ा सा कंसल्ट करके मैं आपको और भी इंफॉर्मेशन दे दूंगी, बाद में प्रोवाइड कर दूंगी. ठीक है, जो कि आपका क्वेरीज है ना अबाउट द ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, बेसिकली दैट वन, तो मैं ज्यादा अच्छे से बता दूंगी आपको बाद में. ठीक है, Okay, thank you. ओके. आई एम जस्ट नोटिंग योर यूजर नेम एंड ईमेल आईडी. ओके, आई विल मेल यू शॉर्टली. ठीक है, Thank you. ओके. Any other person who has any doubt? You can again raise your hand. I'll unmute you and then you can ask the question. Anyone? No more questions? Okay, Ajit Kumar. Okay, Ajit, I have unmuted you. You can हेलो ask. अजय. Good afternoon, ma'am. Ajit this side. Actually, you are conducting this session from ISEC Institute, which is situated near Hosangabad Road. I mean, ओके. नियर मिसरौद जो है एड्रेस हमारा, राइट हियर दिस वन. स्कोप कैंपस जो हमारा मिसरौद में होशंगाबाद रोड साइड, वहीं से ये सारी कोर्सेज एफिलेटेड हैं. ठीक है, विद कैलिब्रेशन ऑफ TNL. ठीक है, तो TNL के कैलिब्रेशन से है ये. Okay, so just one more question, ma'am. So you were saying that this course comprises online as well as offline both. Yes. So Yes. is it possible to complete this course who is working somewhere? Okay, working somewhere. Okay. Ajit, like same question asked about like जैसे शाबिर ने बोला, तो मैं आपको भी आपका मेल कर लेती हूँ नोट, और इस बारे में सारा ज़्यादा अच्छे से आपको बता दूंगी, मैं समझा दूंगी. ठीक है, because I'm just like letting you know about the data science, like what the thing, but about the courses where it is like these courses are collaboration with TNL, तो मुझे थोड़ा सा उनसे बात करके काफी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी. तो जस्ट लाइक शाबिर, मैं आपका भी नोट डाउन कर रही हूँ मेल आईडी, और आपको मेल कर दूंगी मैं सारी जितनी भी क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चंस है. ठीक है, Okay, thank you. ओके. Just one more thing I want to ask, ma'am. हाँ बेटा बोलो. See, actually, I am 40, and though I am aware about the basic things, basic level of Tableau, R, Python, and Excel,
but I am not very much. I'm not good in coding part. So is it Coding, okay. possible to initiate at this stage of life and to learn the new things and to get a job in other domain uh, which is completely new for the person who have not done earlier something like that. So I mean, so acquiring the knowledge is good, but do you think that this course is beneficial for whom those who are working in any organization and who doesn't have much knowledge of coding part? I am asking because already I have done data analytics course from IIM Rohtak, and they also taught me about the data analytics like softwares like Python, R, and but initially they told me this doesn't require the programming type of stuff, but later on they started teaching those things, and I stuck somewhere after a certain point of time because those were not easy to understand for the working professional who are working in a completely different domain. So yes, this is the apprehension of mine, man. So I mean, just you suggest me whether it is possible who is 40 and working in different domain, though he has the understanding of basic level of data, but getting deep into this domain, is it possible? Is it possible? Okay, so you said कि आप कितने साल के हो? 40 years old, right? आप जब से जॉब कर रहे हो एक दूसरे डोमेन में, राइट? आपने कोर्स किया है, बट आपको था पहले कि नहीं कोडिंग इतना पार्ट नहीं होगा, बट मेन जो आया वो मेन कोडिंग पार्ट ही आया समझ में, है ना? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे कि बोला कि इट्स नॉट अबाउट कोडिंग, डेटा साइंस इज नॉट अबाउट कोडिंग कि हम कोड कर रहे हैं और हर एक चीज़ कर रहे हैं, ये हर एक चीज़ों को एक साइकिल को मिलके बना हुआ है, ठीक है? अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी हम पाइथन में कोड करते हैं तो उसके साथ हमारा कम्युनिकेशन स्किल और इवन हमारा एक जो डिसीजन मेकिंग स्किल है वो भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? सो कोडिंग, मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि डेटा साइंस में कोडिंग है ही नहीं या फिर एक वो पार्ट है या कुछ है, बट हाँ एक बेसिक चीज है कोडिंग जो हमें डेटा साइंस में करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? अगर आप कोई मॉडल बना रहे हो, ठीक है, आप कोई मशीन बना रहे हो, अगर आप उसको एल्गोरिथम सिखा रहे हो, आप कोई चैटबॉट बना रहे हो, ठीक है, अगर आप उसको एल्गोरिथम एक मॉडर्न पैटर्न बता रहे हो तो उसको तो आपको कोड करके बताना ही पड़ेगा ना ये बात कि हाँ आपको क्या करना है, आपको कब यस बोलना है, कभी नो बोलना है। जस्ट लाइक गूगल फॉर्म्स, ऑल ऑफ यू नो कि गूगल फॉर्म्स होता क्या है ना? हम क्वेश्चंस बनाते हैं, उसमें आंसर्स रखते हैं, ठीक है, कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी रखते हैं, ठीक है? तो कोडिंग इज अ पार्ट ऑफ डेटा साइंस, और हाँ काफी ज्यादा पार्ट नहीं है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो स्टिल हम काफी लाइब्रेरीज जैसे कि बोला आप लोग फैमिलियर हो, वो लाइब्रेरीज काफी आसान करती हैं उस कोडिंग को करना। तो एज अ डिफरेंट डोमेन पे काम कर रहे हो आप और स्टिल आप सीखना चाहते हो तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप थोड़ा सा टाइम कोडिंग को दे सकते हो, पर कोडिंग के साथ बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, टूल्स हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक है, उससे भी आप ये चीज को सीख सकते हो, ठीक है? सो इट्स नॉट लाइक कि पूरा कोडिंग ही आपको डालना है, जस्ट लाइक जैसे मैंने आपको पावर बीआई का डैशबोर्ड भी बताया, ठीक है, ये सारी चीजें भी बताई। सो डेटा साइंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑल स्किल्स जो मैंने आपको पूरे वेबिनार में थ्रू आउट बताई है। Okay, thank you. That's all. Okay, so Arunima, I hope. Hello, Arunima. So we have put all the details on the chat box. You guys can actually access it. And anyone else, any other questions you have, you can get in touch with us on the numbers that are displayed on the screen. And also you can visit our center. It's on Hoshangabad Road, now known as Narmadapuram Road, Miss Road. And we have given the website information, also our social media handles, so you people can follow us, call us, come and visit our center. Also, if anyone is interested now, we have an offer of 10% off. If
you are registering with 1000 rupees, then this offer will be valid for next 7 days. So you can come down to our center, to our university, check it out, and then decide. Move ahead. So we are wrapping up this webinar. Anyone has any questions? I think so. Okay, bye people. Have a good evening. Bye all of you.